Jai Jagannath. Hello friends, this is Vasudev Panda. Welcome to Master of English. Play on examination. On examination ro complete selection passage. आसंता बोर्ड परीक्षा पे आलोचना करिबा. पाखापाखि 5टी पैसेज अछि. एई 5टी पैसेज भितरु ही प्रश्न आसीबो आ एई प्रश्न भितरु ही प्रश्न आसीबो. तेणु वीडियोटी को संपूर्ण देखिबा पे अनुरोध. पेन एंड पेपर रखी कि क्वेश्चन और आंसर नोट करिबा पे अनुरोध. जदि नुआरे देखुचे चैनल को सब्सक्राइब करिबा पे अनुरोध. वीडियो को लाइक और शेयर करदबा एबे ही करदबा नहले परे आमे परवर्ती समय भूली जा पिले. ताहले स्टार्ट करिया पिले ऑन एग्जामिनेशन आसंता बोर्ड परीक्षा पे प्रथम पाठ कहले चलिबो. या पूर्व आमे माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज पढ़ी सारी ऑन एग्जामिनेशन पढ़ी सारी कंप्लीटली. आज क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबा. आसंता काली तुमको मो तुमको माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रो भी क्वेश्चन आंसर करके देबी. आ काली हमरो ऑन एग्जामिनेशन रो एग्जाम हबो. हमरो टेस्ट हबो सेकंड वीकली टेस्ट. तो पहले जीवा सीधा मोबाइल स्क्रीन को. ये होची प्रथम प्रश्न. प्रश्नटी कोन? व्हाट आर द सब्जेक्ट्स द राइटर वुड हैव लाइक टू बी एग्जामिन्ड इन. माने राइटर करो फेवरेट सब्जेक्ट सब कोन थिला. 2 नंबर प्रश्न. व्हाट सब्जेक्ट्स वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर. को सब्जेक्ट सब परीक्षक मानकर पसंद थिला. 3 नंबर प्रश्न. हाउ ओल्ड वाज द राइटर व्हेन ही एंटर्ड हैरो स्कूल. हैरो स्कूल गला बेले तांकर बयस केते थिला. कहार? विंस्टन चर्चिल. 4 नंबर 4 नंबर होची हाउ डिड द राइटर रिएक्ट टू एग्जामिनेशन विथ लव और डिसफेवर. व्हिच एक्सप्रेशन इन द पैसेज इंप्लाइज दिस. तो पर राइटर से एग्जामिनेशन को घृणा करुले ना भल पाउले. 5 नंबर. दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिजल्ट. व्हाट आर द वन रिजल्ट. कौन हैला से फल. 6 नंबर क्वेश्चन. व्हाट डज द राइटर से अबाउट हिज इंटेंस डिसलाइक ऑफ एग्जामिनेशन. परीक्षा को ना पसंद करुवा विषय से कौन कहते. 7 नंबर प्रश्न. 7 नंबर प्रश्न है पे व्हाट सब्जेक्ट्स वेर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर. परीक्षक मानकर फेवरेट सब्जेक्ट कौन थिला. 8 नंबर. व्हिच सब्जेक्ट डिड द राइटर लाइक मोस्ट. से सब प्रश्न देख बुले बंके दिया जाइए. को सब्जेक्ट गुड़िक परीक्षक माने राइटर को भल लगुला. 9 नंबर. व्हाट रीजन डज द राइटर गिव फॉर हिज नॉट डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशन. परीक्षा रे भल न करिवार कारण कौन देइथिले. 10 नंबर. व्हाट डिड द राइटर राइट इन द आंसर बुक फॉर द लैटिन पेपर. लैटिन परीक्षा रे परीक्षा खाता से कौन लिखिथिले. 11 नंबर प्रश्न. 11 नंबर प्रश्न. हु डज द राइटर गिव द क्रेडिट ऑफ हिज सक्सेस. तांकर जो सफलता से जो पास कले तार क्रेडिट काहाकू देइथिले. 12 नंबर. व्हाट आर द सैड स्पेक्टेकल फॉर द राइटर. तांको पई से दुखद दृश्य कौन थिला. 13 नंबर. व्हाई डिड द राइटर ऑलवेज हैव द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर डॉक्टर वेल्डन. डॉक्टर वेल्डन को पई सब बेले से सम्मान तांको मन थिला काहे की. 14 नंबर. व्हाई वाज द एंट्रेंस एग्जाम द मोस्ट रिमार्केबल वन फॉर द ऑथर. कहीं से एंट्रांस एग्जामिनेशन रिमार्केबल थिला तांको पई स्मरणीय थिला. तो ये थिला प्रथम जो हमर पैसेज अछि प्रथम यूनिट तार 14टी प्रश्न. 14टी प्रश्न भितर 4टी प्रश्न रिपीट अछि पिले. तथापि सबुर उत्तर आलोचना करिवा. तो प्रथम प्रश्न रो उत्तर. द राइटर वुड हैव लाइक टू बी एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री पोएट्री एसे राइटिंग. ठीक अछि. 2 नंबर प्रश्न रो उत्तर. The subject dearest to the examiner were Latin and mathematics. ठीक अच्छी. Then which they said were not to the likings of the writer. आउ जो क्वेश्चन सब पकोथिले से क्वेश्चन से कि विंस्टन चर्चिल पसंद करू नथिले. 3 नंबर. The writer had just passed his 12th birthday when he entered the Harrow school. तांकर माने 12th birthday सरिला परे से जाइथिले. 4 नंबर. The writer did not like the examination. The expression which implied these examinations were a great trial to me. ए लाइन रो एटा क्लियर होउची. नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न. The result was that the writer did not do well in his examination. तार फल थिला कि से परीक्षा रे भलो कले नाही. 6 नंबर प्रश्न रो उत्तर. The writer considered examination quite inhospitable. तांको विरक्तिकर लागुतला. They caused a lot of hardship. तांको कष्ट लागुतला. For the 7 years he was student at Harrow. हारो रे से जो 7 वर्ष से पढ़िथिले. 7 नंबर. द सब्जेक्ट दैट वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर वर लैटिन एंड मैथमेटिक्स. लैटिन एंड मैथमेटिक्स कहार फेवरेट थिला बिले परीक्षक मानकर. 8 नंबर. द सब्जेक्ट दैट द राइटर लाइक द मोस्ट हिस्ट्री पोएट्री एंड एसे राइटिंग. ए तीनटा सब्जेक्ट तांकर फेवरेट सब्जेक्ट थिला राइटर कर. 9 नंबर. द क्वेश्चन ऑन लैटिन एंड मैथमेटिक्स वर इनवैरिएबली दोस टू व्हिच द राइटर फेल्ड टू गिव सैटिस्फैक्टरी आंसर. ए भलिया प्रश्न पड़िथिला जो प्रश्न उत्तर से दे पार नथिले. द एग्जामिनर ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट ही डिड नॉट नो. से जहा जानि नथिले से ऊपर प्रश्न करूथिले. आ राइटर चाहुथिले से जो जिंस जानि चंती से ऊपर प्रश्न आसु. क्वेश्चन नंबर 10. इन द आंसर बुक्स कौन लिखिथिले से
For the Latin paper, the writer wrote his name and at the top of the page and wrote down the number of the question 1 and after a lot of reflection put brackets केवल bracket ଦେଇଦେଲେ 11 नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न काहाकू क्रेडिट ଦେଇଥିଲେ जो प्रश्नटा थिला the writer gives the credit of his success in the entrance examination to Dr. Weldon को से क्रेडिट ଦେଇଥିଲେ एतिक लिखले भी हमें 2 मार्क पाइबा पिले the sad spectacle कौन थिला से sad spectacle the sad spectacle for the writer was the blot and several smudges owing to tears से tear mark लुह पड़ी के जो कला कला दाग सृष्टि हेतिला 13 नंबर the writer always had the greatest regard for Dr. Weldon का प्रति तांको मनरे यथेष्ट सम्मान रहउतला because he was a man capable of looking beneath the surface of things कारण से माने पेपर तलर जिनस भी देखि पारुथिले जानि पारुथिले माने पिलार जो इंटेंट क्वालिटी अच्छी इनर क्वालिटी से विषय 14 नंबर द एंट्रेंस एग्जाम वाज द मोस्ट रिमार्केबल वन फॉर द ऑथर का पाई सब रिमार्केबल थिला एंट्रेंस एग्जाम काहे कि बिकॉज़ ही वाज अनेबल टू आंसर ए सिंगल क्वेश्चन गोटे भी प्रश्न उत्तर देई नथिले इन द लैटिन पेपर ही जस्ट रोट हिज नेम ऑन द टॉप ऑफ द नंबर एंड फर्स्ट क्वेश्चन हाउएवर ही वाज पास्ड जा भी हो तांको पास कर दिया जायतिला तो ये थिला पिले प्रथम पैसेज वर्तमान द्वितीय पैसेज इन कन्सिक्वेंस ऑफ हिज डिसीजन टू आरंभ होउची तापर एठी आसले क्वेश्चन कोन व्हाट आर द राइटर्स पोजीशन ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ एडमिशन रजिस्टर हिसाब रे राइटर कर पोजीशन कोन थिला 2 नंबर व्हाट आर द थर्ड डिवीजन ऑफ द फोर्थ मीन थर्ड डिवीजन ऑफ द फोर्थ चतुर्थ श्रेणी रो तृतीय जो नंबर थिला यार अर्थ कोन 3 नंबर व्हाट डज द राइटर मीन बाय आई गेन नो मोर एडवांटेज मते कोनोसी लाभ मिलिला नाही फ्रॉम द अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट यार अर्थ से कौन कहबा पे चाहिए 4 नंबर हाउ डिड ही बिकम द लास्ट बॉय इन द क्लास से क्लास रो लास्ट बॉय केमती हेले 5 नंबर क्वेश्चन होची व्हाट इज द कस्टम ऑफ कॉलिंग द रोल एट हारो रे माने रोल कॉल रो सिस्टम कोन थिला 6 नंबर व्हाट इज मीन बाय द एक्सप्रेशन इनविडियस ह्यूमिलिटी कहले कोन 7 नंबर व्हाट डिड लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेट व्हाई डिड द हारो स्कूल स्टेप हारो स्कूल रे काहे की बहुत लोक जगुथिले 8 नंबर कोन व्हाई इज लास्ट ऑफ ऑल व्हाई डिड पीपल शो ये पिला शेष काहे की होची ये विषय लोक काहे की पचारुथिले यार उत्तर आलोचना करिबा प्रथम प्रश्न द राइटर्स पोजीशन ऑन द मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन ऑफ द हारो स्कूल वाज द थर्ड डिवीजन ऑफ द फोर्थ फॉर्म चतुर्थ श्रेणी रो तळबटु 3 नंबर रे से थिले नहीं 2 नंबर द थर्ड डिवीजन ऑफ द फोर्थ फॉर्म मीन्स यार अर्थ होची दैट द क्लास हैड ग्रुप्स द गुड द एवरेज एंड द इंफीरियर द राइटर वाज पुट इन द लास्ट ग्रुप 3 नंबर होची the names of the new boys were printed on the school list in alphabetical order रे लिखा होतला the writer's name being Spencer Churchill gained no more advantage जेतु तांको ना एस रे स्टार्ट होतला तांको कोनोसी लाभ मिलेला नाही क्वेश्चन नंबर 4 पिले the writer was only 2 from the bottom तळपटु 2 number of the whole school these two boys left school almost immediately owing to illness or some other cause आउ सेही 2 जण पिला स्कूल छाडी देले सेमानकर देह असुस्थ पई किबा अन्य कोनोसी कारण पई वर्तमान जो इटन और हारो रोल कॉल सिस्टम रो डिफरेंस थिला सी ऊपर बिले the custom of calling the roll at Harrow is that the boys file first a master in the school yard answer one by one तो कोन करथिले गोटे माने जने टीचर के सामना रे से माने जाउतले जने पर जने यस सर कहउतले बट द कस्टम एट इटन इज दैट द बॉयज स्टैंड इन अ क्लस्टर एंड लिफ्ट देयर हेड्स किंतु एठी दाढ़ी रे ठिया होतले एवं टोपी उठौतले 6 नंबर द एक्सप्रेशन इनविडियस ह्यूमिलिटी मींस meekness in unfavorable circumstance माने निज पई असह्य एक परिस्थिति जोठी निजकु माने अपमानित मने करे जने मनुष्य 7 नंबर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेटेड काहे कि लोक माने जगुथिले जो प्रश्न थिला ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेटेड ऑन द हारो स्कूल स्टेप टू हैव ए ग्लिम्स ऑफ स्पेंसर चर्चिल एज ही हैपेंड टू बी द सन ऑफ लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल कारण से लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल रो पुओ थिले 8 नंबर people said so लोक माने काहे कि कहउतले why he is last of all लोक माने कहउतले कारण they thought why Spencer Churchill was the lowest in the class काहे कि ये बाबू सभा तळे रहउतले ओके ये थला 2 नंबर पैसेज वर्तमान 3 नंबर पैसेज देखबा आई कंटिन्यूड इन दिस अनप्रिटेंशियस सिचुएशन जो पैसेज अछि से पैसेज रो क्वेश्चन वर्तमान हमें आलोचना करबा क्वेश्चन देखो व्हाट द अनप्रिटेंशियस सिचुएशन Spencer Churchill was
in and what are the immense advantage he gained over the cleverer boys कौन से सिचुएशन थिला तार लाभ केमते मिलेला 2 नंबर what kind of students were taught Latin and Greek at Harrow Latin and Greek को माने पढुतले 3 नंबर what set of students were taught only English को माने English पढुतले question number 4 how does the writer rate English as a subject and Mr Somervell as a teacher English को subject हिसाब रे Mr Somervell को teacher हिसाब रे writer किभଳି देखुतिले 5 नंबर what part of the English grammar did the writer learn from Somervell Somervell ठारू से कोन पढिले 6 नंबर what was Mr Somervell system of teaching the English language English Somervell केमिति पढौतिले 7 नंबर what made the writer learn English thoroughly writer English thoroughly केमिति सिखिले 8 नंबर how did the writer score over his clever school fellows in after years परवर्ती दिन मानंकरे तांकर जो सांग माने थिले चतुर पिला माने तांको ठारू भलो केमिति कले सी 9 नंबर why was the writer biased in favor of boys learning English काहे कि राइटर सपोर्ट करथिले पिला मानकर इंग्लिश पढिबा सपक्ष रे 10 नंबर what does the writer say about the learning of Latin and Greek in school Latin and Greek विषय से कोन कहिथिले ये थिला 10 टी क्वेश्चन वर्तमान देखिबा पिले आंसर सेक्शन so प्रथम प्रश्न Spencer Churchill was in the unpretentious situation of being put in the third division of the bottom for a year hence he had the immense advantage of learning and acquiring a high degree of proficiency in the English language, thereby gaining immense advantage over the cleverer boys. ये थिला answer. Question number 2. Cleverer पिला माने कौन पढ़ुଥିଲେ? Clever students who were quick at learning thing were taught Latin and Greek at Harrow. 3 number. Student who were considered dons जो माने बुका थिले से माने केवल English पढ़ुଥିଲେ. Question number 4. The writer rate English as a subject very highly and considers it a noble thing. Then make their way he says Mr Somervell was the most delightful man से तांको हिसाब रे Somervell थिले सबटर बेस्ट टीचर आ इंग्लिश थिला बेस्ट सब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 को जिबा पिले from Mr Somervell the English teacher the writer learned English parsing and analysis English parsing आउ analysis से पढिथिले क्वेश्चन नंबर 6 Mr Somervell system of teaching the English language are very special से स्वतंत्र भाव इंग्लिश पढौथिले and effective. He took a fairly long sentence and broke it up into its components. गोटे लंबा सेंटेंस नौतले एवं तार उपादान गुडी को अलगा अलगा करिकि ताको ब्लैक माने ब्लैक रेड ब्लू ग्रीन इंक देगिरी पढौथिले क्वेश्चन नंबर 7 अपिले the writers remaining in the third fourth 3 times as long as anyone else and the intensive drill of the language items daily made him learn English thoroughly कारण से स्कूल रो तृतीय डिवीजन रे रहउथिले तेणु तांकु 3 थर प्रैक्टिस करिवा पे पडुतला जा फल रे से thoroughly सिखि गले इंग्लिश 9 नंबर प्रश्न द राइटर स्कोर अबाउट द क्लेवर बॉयज केमति से परवर्ती समय रे जो क्लेवर बॉय ऊपर स्कोर करथले से विषय by faring much better than them in using English in their day to day life and in making their way in life his proficiency in English gave him big advantage over him से इंग्लिश भल से जानी थिबारु से तांकर जो फेलो स्कूल बॉयज थिले तांको ठारू तांकू लाभ मिलिला 9 नंबर प्रश्न The writer was biased in favor of boys learning English because English was vital to earn living in those days से दिन मानकरे इंग्लिश द्वारा चाकरी प्राप्त होउतला इंग्लिश द्वारा जनकर माने जीवन संपूर्ण होउतला रोजगार क्षम होई पारुतला क्वेश्चन नंबर 10 शेष प्रश्न कोन द राइटर सेज दैट द क्लेवर बॉयज may learn Latin as an honor and Greek as a treat, but they should have good grounding in the English. Latin और Greek पढ़ंतु किंतु English भी पढ़िबा आवश्यक अछि वर्तमान 4 नंबर पे से देखिया पिले एठी I first went to Harrow जो पैसेज रहिला ए पैसेज तो एठी रहिला प्रथम प्रश्न कोन what was the swimming bath at Harrow school like नंबर 2 what kind of pranks did the boys से माने को बलिया prank करूथले then question number 3 what did the writer do to the boys standing in a meditative posture writer कोन कले question number 4 how did the boy react to the writer's prank से prank को केमते react कला 6 number what kind of joke did the boys have at bath को joke से माने से question repeat हेची 6 number what did the writer learn about emery विषय से कोन जानिबा पाइले 7 number how did the writer apologize for his misconduct तांकर सु दोषो पई से किपरि क्षमा मागिले 8 number what did the writer apologize to emery for
कहीं से माने क्षमा मागिले क्वेश्चन नंबर 9 हाउ डिड द मैटर एंड हैप्पीली फॉर द राइटर केमिति से घटनाटी शेष होला क्वेश्चन नंबर 10 हु इज कंपेयर्ड विथ हुम कहा सहित कहा को कंपेयर करा जायछि क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन रो बिंदु कोन थिला ओके 11टी प्रश्न ए 11टी प्रश्न रो उत्तर आलोचना करिबा पिले प्रथमे स्विमिंग बाथ ता किपरि थिला The swimming bath at Harrow School was a very big one. बहुत बड़ा थिला. It was more like the bend of a river than a bath. Question number 2. The boys enjoyed themselves at the swimming bath by playing pranks on each other. माने enjoy करुथिले परस्पर सहित prank करिकि. They would come up behind someone and push them into the pool. This sort of prank was a habit with the boys. Question number 3. One day the writer saw a boy standing in a meditative posture. And what did it? Wrapped in a towel on the very brink of swimming pool, coming stealthily from behind. He pushed him in. तो गोटे दिन गोटे पिला को देखिले से मेडिटेटिव पोस्टर ठिया आइतिला से पछपटु चोर बेले आसिले ताकू पानी को ठेली देले क्वेश्चन नंबर 4 द बॉय पुश्ड into the pool water reacted sharply ता रिएक्शन कोन थिला he became furious and reached the shore by making fish stroke से भयंकर हो गला एवं फिश स्ट्रोक करके पहुंच गला he soon overtook the writer seized him in a ferocious grip hauled him into the pool तांको धरिला भितर को टाणी नै कि पानी रे बुडेइला क्वेश्चन नंबर 5 रो आंसर the boys would come up behind someone and push him into the pool this is the prank question number 6 पिले from the crowd of younger boys the writer learned that emery विषय से माने कोन कहले was in 6th form जे emery 6th class रे थिला head of the house champion at gym had got his football color ए सब जिंस से माने कहले question number 7 the writer apologized for his misconduct by approaching emery in a state of alarm केमिति से भूल मागिले and say sorry to him he also said that he regretted mistaking him for a fourth form of boy से कहले जे मु आपन को चतुर्थ श्रेणी रो पिला बोली कहउतली भाबुतली कारण आपन मो भलिया ही देखा जाउचंती then also he made a comparison that the letter was small like the farmer's father जे एमरी विंस्टन चर्चिल को बापा भलिया से भी छोटो माने गेड़ा व्यक्तित्व क्वेश्चन नंबर 8 है द राइटर apologized to Emery for mistaking him for a fourth form of boy से काहे की क्षमा मागिले कारण से चतुर्थ श्रेणी रो पिला बोली ताको ठेली देइतिले क्वेश्चन नंबर 9 द मैटर एंडेड हैप्पीली फॉर द राइटर व्हेन ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज द सन ऑफ रैंडल्फ चर्चिल जेतेबेले निजको सन ऑफ रैंडल्फ चर्चिल हिसाब रे इंट्रोड्यूस करचंती मैटरटा हैप्पीली एंड हे गेला क्वेश्चन नंबर 10 एमेरी इज कंपेयर्ड विथ द राइटर्स फादर किए कहा सहित कंपेयर करा हितला एमेरी को राइटर निज बापा को सहित कंपेयर करथिले क्वेश्चन नंबर 11 एमेरी एंड द राइटर्स फादर बोथ वर स्मॉल इन हाइट एंड हैड ग्रेट अचीवमेंट्स एमेरी आउ राइटर को बापा कहले विंस्टन चर्चिल को बापा दुई जण देखो गेडा थिले आउ दुई जण माने निज निज क्षेत्र रे भलो अचीव भी करथिले शेष पे चेष्टा पिले आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू सी ए गुड डील माने लास्ट यूनिट रे हमें क्वेश्चन पाउचे लुक एट दिस 3 years difference in age is not so important as it is at school how does the writer prove it केमती प्रूव करचंती नंबर 2 how did the writer fare at school किबळी से स्कूल रे भलो करथिले क्वेश्चन नंबर 3 how did the writer win a prize at school प्राइज किबळी जीतिथिले क्वेश्चन नंबर 4 what are the writers note or the achievement at school तांकर माने आखि दृश्य कोन से जो पाइथिले सेडी प्राइज सेटा कोन थिला achievement कोन थिला क्वेश्चन नंबर 5 how did the writer prepare himself for the preliminary examination for the army की भली प्रस्तुत होइतिले क्वेश्चन नंबर 6 why does the writer call his success an end plan तांकर सक्सेस को से जुआ बोली काहे की कहिचंती एई छोटा प्रश्न रो उत्तर आलोचना करिबा क्वेश्चन नंबर 1 रो उत्तर होछि बिले while at school जते बेले से स्कूल रे थिले the writer was 3 year junior in age to emery थारु 3 वर्ष जूनियर थिले this difference in age mattered a lot at school रे ए डिफरेंस ता बहुत मैटर करूतला but later on the writer saw a good deal more of him in public life जते बेले साधारण जीवन रे से माने मिसिले both of them were British conservative party politician and such they were cabinet colleagues तो से ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी रो राजनीतिज्ञ थिले एवं दुई जण कैबिनेट रे सांगरे मध्य काम करूथिले क्वेश्चन नंबर 2 पैसेज नंबर 5 रो
At school, the writer did not make his mark as a bright student. से जने भल पिला बोली तांको कंसीडर करा जाउ नथिला. He did not show any signs of greatness. माने से किमती आखि दृश्य काम किछि करि नथिले. He stagnated in the lowest form. से सब बेले क्लास रो तळे रहउतले. Thus he fared badly at school. से स्कूल रे भल परफॉर्मेंस तांकर नथिला. Question number 3. He won a prize open to the whole school for reciting to the headmaster 1200 lines of Macle's Lays of Ancient Rome. से गोटे 1200 धाड़ी कविता मैक्लेस ले ऑफ एंशिएंट रोम पूरा स्कूल कंपटीशन रे आवृत्ति करके निर्भुल भाव में प्राइज पाइथिले. क्वेश्चन नंबर 4 पिले while still at the bottom of the school जतबेले से स्कूल रो सभा शेष रे रहउथिले the writer succeeded in passing the preliminary examination for the army. से आर्मी प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन आर्मी रो जो प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन हेतला ता पई से कृतकार्य हेतिले सेतरे से पास करिथिले. Such was his noteworthy achievement at school when many boys far above him failed miserably in the examination. जते बेले कि तांको ठारू ऊपर थिबा पिला माने फेल हेतिले. Question number 5. The writer was favored by good luck. Writer करो भाग्य भलो थिला. Luckily he knew that besides other question the candidates were going to be asked to draw from memory a map of some country or other. जो एनप्लेन कथा कुआ जाई छि बिले केमति से भलो कले तो से जानी थिले जे कोनोसी देशर एक मैप तांको आंकिबा पे पड़िबो. By way of final preparation for the exam he put the names of all the maps in the atlas into a hat and drew out New Zealand. तो कोन कले तांगर फाइनल प्रिपरेशन रे सब देशर मैप सब को लेखि करी चीट करी के तांगर टोपी रे पकैले एवं न्यूजीलैंड ताकू ड्रॉ कले. आउ परीक्षा रे से न्यूजीलैंड ही आस्तिला जहा फल से परीक्षा रे भलो करथिले. शेष प्रश्न रो उत्तर आलोचना करिया पिले. शेष प्रश्नटी कोन कहीं कि से एनप्लेन बोली तांगर सक्सेस को कहिसंती. ही कॉल्स हिज सक्सेस एन एनप्लेन बिकॉज़ ही गॉट पेड वेरी हाई मार्क्स फॉर हिज पेपर. कारण सेही पेपर रे से बहुत हाई मार्क पाइथिले व्हिच वाज सो टू से 35 टाइम्स द मनी वे गॉट ऑन एन इवेंट. जाहाकू माने 35 टाइम्स मनी वे गॉट बोली कहा जाय छे. माने 35% मार्क 35 मार्क्स पाकापाकी से पेपर रे से स्कोर करथिले जोटा अनबिलीवेबल थिला तांका पई. तो ये थिला पिले ऑन एग्जामिनेशन रो समस्त प्रोबेबल पैसेज आसंता बोर्ड परीक्षा पई. थैंक यू फॉर वाचिंग पेशेंटली. स्टेट इन मास्टर ऑफ इंग्लिश. जय जगन्नाथ.